created history by being first women deputy speaker. So can you talk to us about, like Sikkim is quite forward looking when it comes to gender roles. So can you talk to us about, the state of women in the state, the role of women in the state, and how they are being empowered to take on more leadership roles in public? Thank you so much. First of all, I would like to express my warm gratitude to our Honorable Chief Minister, Government of Sikkim and India today for providing us this wonderful platform. This platform itself is a great example of human empowerment of our state. Yes, indeed, it is indeed. This is a great pride and great responsibility to have been as a first woman deputy speaker in Sikkim Legislative Assembly. और मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सिर्फ पर्सनल अचीवमेंट्स नहीं है, सिर्फ राजकुमारी थापा के अचीवमेंट्स नहीं है, और ये है रिफ्लेक्शन ऑफ आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर्स प्रोग्रेसिव विजन्स, जिसके तहत आज सिक्किम के सभी बेटियों के लिए, बहनों के लिए और माताओं के लिए ये एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। ये प्रोग्रेसिव विजन के तहत आज सिक्किम में पॉलिटिक्स में भी हमारे बहन, हमारे महिलाओं आगे बढ़ रही है, और इसके साथ साथ सिक्किम में एक ऐसा माहौल है जहां पर महिला होने से कोई पीछे रहना नहीं पड़ता है। एक उन्नतशील और विकासशील एनवायरनमेंट थ्रू डायनेमिक लीडरशिप के कारण से ये बना हुआ है। और सिर्फ वर्ड में नहीं, सिक्किम हमारे राज्य में महिलाओं को सिर्फ वर्ड में नहीं लेकिन एक्शन में थ्रू कंक्रीट पॉलिसीज एंड एक्शन के तहत आज सिक्किम के महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में इतना ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, जिसके कारण हमें देखने को मिलता है कि ग्रोइंग ऑफ वुमेन रिप्रेजेंटेशन इन डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, एजुकेशन एंड इन एंटरप्रेन्योरशिप। इसमें हम यहाँ पर बताना चाहते हैं कि आज सिक्किम में जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उसमें 50% हमारा वुमेन्स लीड कर रहे हैं, 42 में 21 हमारा वुमेन है। इसी तरह से वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में इस 5 साल में मोर देन 56% अभी हमारा बेटी और बहनों वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरह से स्टार्टअप में भी और विभिन्न सेक्टर्स में, एजुकेशन में भी अभी हमारे बेटियों ही आगे बढ़ रही है। सिक्किम में एक ऐसा बोल सकते हैं कि हमारा स्टेट हमारे देश के बाकी राज्यों में से एक वुमेन फ्रेंडली स्टेट बोला जा सकते हैं। और ये एनवायरनमेंट ऐसे दिखाने के लिए नहीं, लेकिन हमारे वहाँ एक उदाहरण सेट किया है कि जिस वुमन में जो पोटेंशियल है, जो क्रिएटिविटी है, उसको आगे ले जाने के लिए सिर्फ उनका ही नहीं, सरकार का भी बहुत सहयोग है। और हमारा गवर्नमेंट चाहते कि हमारे राज्य की बेटियों, महिलाओं देश के अन्य राज्यों से भी आगे हो सके डिफेंस सेक्टर में। ये हमारे राज्य के माहौल, वहाँ पर कोई महिला होने के कारण पीछे बैठना नहीं पड़ता है, लेकिन फोर्सफुली आगे ले जाने के लिए सरकार हमारे साथ में है। थैंक यू। Thank you, Raj ma'am. So Annapurna ma'am, so like what Raj ma'am very clearly shared how women are represented in public roles as well, but Sikkim is still a very traditional society. So do you think that can sometimes be restrictive for women to be ambitious or to take on some roles, or or go venture into areas that are male dominated? Thank you, Sunal. Thank you, India Today, for having us here. We are so proud to be here, all the women. Actually, like ma'am was saying, let me add to the statistics. In the government of Sikkim, in the gazetted posts, out of the number of officers in Group A and B, we have 13,333 women and only 2,021 men. So yeah, so we are a part of society, and yes, we are a traditional society, but luckily our tradition does not say that women cannot be ambitious. So we can have ambitions, and I think we are succeeding.
So that's truly a role model that one needs to emulate. Certainly, a lot of other states as well. Moving on, we have two entrepreneurs. So, Rinzing, we'll start with you. Can you give us an overview about? I mean, a lot was said in the earlier session about the landscape for MSMEs and startups in the state. But from your perspective, as a women entrepreneur, how do you see the opportunities for you that are there in Sikkim, and how do you see it has evolved in the last 30, 40 years? The entrepreneurial landscape in not just in Sikkim overall has changed significantly in the last couple of years, and there are many factors which comes into play. Just to cite a few examples: digital transformation, the rise in e-commerce platform, cloud computing, mobile application has given entrepreneurs access to global market with very minimum cost. And secondly, I would say the shift in societal values. Like, we come from a society where government job is given the highest priority, right? It still is. But we can actually see the shift in mindset slowly, that entrepreneurship is, now people are talking about entrepreneurship. Parents are okay with, kids starting up with their own startup. So that is a huge change that I've seen in the past couple of years. And other factors would be inclusivity in entrepreneurship, the support that entrepreneurs are getting from the entrepreneurs from diverse background, underrepresented backgrounds like women, various other communities. Though that has kind of, we can see those changes. And the other factors, I would say, is I think there are, I mean, lots to add, but these are the few points that I would like to, everybody to reflect on. Thanks, Rinsing. Shenya, I would also like to speak to you. You are a very young entrepreneur. So, what inspired you to start a brand that actually tries to support and encourage local crafts, in a very contemporary format? And do you also think that, as representing Sikkim, it's somewhere your responsibility to bring that narrative, the culture, the crafts into the mainstream? First of all, I would like to start by thanking India today for having us here. Yes, I believe that it is my responsibility, not only not only in an emotional way, but in an economic way as well. That it is my responsibility to show Sikkim's artistic legacy, to create a platform where our heritage, our culture, our story is being told to the entire global platform. The reason why I started Panu Handicrafts, focusing on local artisans, is because this cultural crafts in the market was untapped. This market was untapped, and the artisans who are dedicated to this craft was neglected because they were not given the platform to sustain their livelihood. So I wanted to act as a catalyst. Palmo Handicrafts as a business acts as a catalyst for the local artisans to provide them sustainable livelihood, because local artisans are the hands that will preserve our culture, our creativity as Sikkim's artistic legacy. So I wanted to build a bridge. I wanted to create a catalyst. I wanted to be the catalyst to provide sustainable livelihood to the artisans who are responsible, who are the backbone of Sikkim's artistic legacy. Thank you. Thanks, Palma. Now we have a very interesting woman right here. So Manita, I'm not sure if everyone knows, Manita is a Everester, and not only that, she has from the world's highest 7 continent peaks, she has already climbed 5. So Manita, literally, you have climbed 5 summits metaphorically and literally. So, can you tell us, like, mountaineering itself, mountaineering, trekking is a very male-dominated sector. So, what led you to आप माउंटेनियरिंग में कैसे आए, आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, एंड आपको encouragement सपोर्ट फैमिली से मिला, स्टेट से मिला, कोई इंस्टीट्यूशन से मिला, थोड़ा आप हमें उस बारे में बताएंगे? Thank you. First of all, mountains know no gender.
माउंटेन नेचर आपको मेल और फीमेल का डेफिनेशन ही नहीं देता है वहाँ पर। आपको मेल हो या फीमेल, आपके पास बराबर का क्षमता होना चाहिए ऊपर जाने के लिए। एज इफ अभी फुटबॉल का बात हो रहा था, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी सेम है, मगर माउंटेन्स में जेंडर में डिफाइन नहीं होता है कि आप मेल हो आप आगे आ जाओ, ऐसे वाला नहीं होता है। आपको ज़्यादा प्रायोरिटीज मिलेगा, आप डोमिनेट करो लड़कियों को, ऐसा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यूर वेलकम, माउंटेन्स वेलकम यू ऑल। तो मेरा जर्नी जब मैं क्लास 9 में थी, तब मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। एनएसएस से ट्रेनिंग दिया था, तो मैंने वहाँ पर ज्वाइन किया था। सो लेटर ऑन मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि आफ्टर 9 जब मैंने बेसिक कंप्लीट किया, तो आई डिसाइडेड कि ये तो मेरा टाइप का कुछ नहीं है। फिर आफ्टर लेटर ऑन मैं बढ़ती गई और मेरा थोड़ा दिमाग खुलता गया। तो आई रियलाइज कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, क्योंकि सब तो डॉक्टर्स बनता है, इंजीनियर्स बनता है, एवरीबडी गो फॉर एनडीए ऑफिसर, फुटबॉलर, ना, सो मेनी थिंग्स। तो मुझे घर में भी मेरा बैकग्राउंड भी ऐसे ही है। आई एम, माई मदर इज शेरपा, नो, दैट इज वाई आई थिंक मेरा वो हो गया, खून में आ गया कि आई वॉन्ट टू डू डिफरेंट। तो आई थॉट मैं क्या करूँ। तो एक दिन ऐसे मैं देख रही थी, तो आई रियलाइज कि मैंने कोर्स किया है, बेसिक कोर्स। आफ्टर दैट मैंने वहाँ पर सर्च किया कि क्या क्या होता है। मुझे लगा था कि सिर्फ कोर्स करना है, मगर स्कूल में जैसे पढ़ना होता है ऐसे पढ़ना होता है वहाँ पर भी। पास भी होता है वहाँ पर, फेल भी होता है। फेल हुआ तो आप वहीं पर रह जाओगे, बेसिक की यहीं पर, और पास हुआ तो आप एडवांस में चले जाओगे। फिर एडवांस में भी सेम थिंग, आप क्लास 10 12 पास करते हो ना, सेम थिंग गोज ऑन माउंटेनियरिंग कोर्सेस। सो ऐसे ऐसे करती जब मैं गई, तो आई रियलाइज कि अभी मुझे क्लाइंब करना है माउंटेन। ऐसे आपको बेसिक में भी थोड़ा हाइट गेन करवाते हैं, एडवांस में भी करवाते हैं, मतलब मगर मुझे लगा कि अभी मुझे 6000 करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरा है तेंजिंग खांग, वेस्ट सिक्किम में जो है, हम लोग के गोचिला के पास। वो मैंने क्लाइम किया विद द टीम ऑफ आवर टूरिज्म डिपार्टमेंट। जब हम लोग का फर्स्ट सिलेक्शन हुआ था 2012 में, तब मैंने तेंजिंग खांग क्लाइम किया। उसके बाद आई रियलाइज, ओ या आई कैन डू इट मोर देन दिस। मैं कर सकती हूँ, 6100 में आराम से कर सकती हूँ। तो ओ गॉड, आई कैन डू इट। सो उसके बाद मैंने करती गई। इतना ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना होता है। फिर मैं 6000 से 8000 नहीं मार सकती। फिर 6500, 700, 7000 करते करते मैं गई। तो अ, बहुत सा डिफिकल्टीज आया मुझे इन बिटवीन। इतना ज़्यादा मैंने कभी प्रेशर हैंडल नहीं किया था। मगर मैंने वहाँ पर, जैसे हम लोग के यहाँ पर जनरल लाइफ में तो हम लोग ऐसे बहुत से फेसेस करते हैं ना, तो माउंटेन में भी सेम है। मगर वहाँ पर क्या सिखाते हैं ना आपको कि टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, लीडरशिप कैसे करना है। तो वो जहाँ पर मैंने माउंटेन में सीखा था, मैंने जनरल लाइफ में भी वही अप्लाई किया। तो वो लाइन से मैं क्रॉस हो गई। एंड देन इन 2021 आई सेलेक्टेड फॉर द एवरेस्ट। और एवरेस्ट करने के बाद, अभी एवरेस्ट का कहानी लंबा हो जाएगा आपको, तो आई एम गोइंग ऑन नेक्स्ट। एंड देन after that in 2021, 21 I climb Everest, and 22 में आपने जैसे पूछा कि आपको किस चीज़ से I'm encouraging myself, तो मुझे लगा 2022 में मुझे जब गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम ने सिक्किम रत्न से नवाजा, तो आई फील सो प्रेस्टिजियस माई सेल्फ कि सिक्किम रत्न इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ सिक्किम, नो। सो तब मुझे लगा कि ओ दे बिलीव इन मी, सो आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट फॉर द यंग यूथ्स। तो उसके बाद मेरा 7 सबमिट का जर्नी स्टार्ट हुआ। Thank you. That's a very inspiring story, Manita. So, ma'am, we have already spoken a lot about how women in Sikkim have equal opportunities. पर उसके बावजूद बहुत सारी स्कीम्स हैं फॉर women in this state. अम्मा स्कीम, वाहिनी स्कीम, वत्सल्या स्कीम. तो वो क्यों हैं फिर? हम्म? और अगर हैं तो how are they helping women?
थैंक यू सो मच। ये एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस है। जो आपने बोला जेंडर इक्वलिटी है स्टेट में, तो फिर ये वुमन के लिए विभिन्न स्कीम सरकार क्यों बना रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हम भगवान मानते हैं, उसमें सबसे पावरफुल वेल नॉलेज एंड पावर का 3 देवी है जो जिसके बिना संसार नहीं चलता है। इसी तरह से सिक्किम में जेंडर इक्वलिटी है, वुमेन एंड मेन इक्वल है एवरी सेक्टर में। फिर भी हमारे स्टेट का हेड चाहते हैं कि जो वुमेन के अंदर अंदर में जो पोटेंशियल, मैंने पहले भी बोला, वो बाहर आना चाहिए। और इसी के लिए अभी जो रूलिंग पार्टी है सिक्किम में, सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी, इसके सम्माननीय अध्यक्ष प्रेसिडेंट साहब ने नारी मोर्चा को रिप्लेस करके इतना अच्छा संबोधन करते हैं दे दिया है कि नारी शक्ति। इसीलिए नारी के अंदर जो शक्तियाँ होती है, जो समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और ये बाहर आके डिस्ट्रक्शन नहीं, लेकिन डेवलपमेंट के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए महिलाओं के अंदर के शक्ति बाहर आना चाहिए पॉजिटिवली। ये करके ये जो संबोधन नारी शक्ति करके हमारे हम नारियों को, महिलाओं को संबोधन करती हैं। तो इसीलिए जो ये स्कीम है, वुमन रिलेटेड स्कीम से जो गवर्नमेंट ने शुरू किया है, जैसा कि बहिनी योजना, ये जितने भी स्कीम्स हैं जेंडर इक्वलिटी के लिए नहीं, लेकिन सोशल वेलफेयर के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, राज्य को और आगे ले जाने के लिए किया है कि महिलाओं की तरफ से, क्योंकि महिला जो होते हैं वो बहुत डेडिकेटेड होता है। इसलिए ये जो बहिनी स्कीम है, ये स्कीम 2019-20 से स्टार्ट हुआ है। इसमें शायद हमारे राज्य ही फर्स्ट राज्य है ये स्कीम शुरू करने वाले, क्योंकि हमारे बेटियों के लिए जिसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होता है, इसके जब ये मेंस्ट्रुएशन का टाइम होता है तो बहुत ही दिक्कत और बहुत ही प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है स्कूल में। तो इसीलिए क्लास 6 से लेके कॉलेज तक अभी फ्री सैनिटरी वेंडिंग मशीन्स इंस्टॉल किया है, जहाँ से जो लड़कियां स्कूल जाती है उसके लिए सोचना नहीं पड़ता है, वो फ्रीली स्कूल जा सकती है ये टाइम में भी। और मोर देन 18,000 स्टूडेंट्स इसका लाभ, गर्ल्स स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा रहे हैं अभी तक। इसके साथ ही में जो आमा स्कीम है, जो बीपीएल वुमन, मैरिड वुमन जो 40 इयर्स टू 60 इयर्स की वुमन के लिए ये स्कीम है। पर ईयर 40,000 महिलाओं के जो 40 इयर्स से 60 इयर्स बीपीएल फैमिली के वुमन है जो गवर्नमेंट सर्विस नहीं करते, उसके लिए ये डायरेक्टली एनुअली 40,000 उसके अकाउंट में सरकार डिपॉजिट कर देते हैं। ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके ये जो अमाउंट उसमें डालते हैं तो अपने महिला उस अमाउंट को अपने परिवार के और अपने आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने के लिए वो अमाउंट को, वो राशि को यूज़ करते हैं इसमें। और फिर भी इसमें जिसका ट्रांजैक्शन ज़्यादा होगा, अच्छी तरह से ज़्यादा होगा, डिपॉजिट बढ़ाएगा, उसके लिए भी सरकार ने एनुअली एक अवार्ड डिक्लेयर किया है। जिसका ट्रांजैक्शन स्टेट में सबसे अच्छा होगा उसका फर्स्ट प्राइज से 3 लाख रुपीज़, सेकेंड प्राइज से 2 लाख रुपीज़ और थर्ड प्राइज से 1 लाख रुपीज़। ये इनकरेज करने के लिए, क्योंकि वो अपने आप में आर्थिक रूप में स्ट्रांग हो सके, इसलिए स्कीम लागू हुआ है। ये हमारे स्टेट में मोर देन 14,000 वुमन स्कीम का लाभ उठा रहे हैं। इसके साथ साथ में वात्सल्य स्कीम, अभी जो पद्मश्री अवार्डी बाईचुंग भुटिया साहब ने जो फर्टिलिटी रेट का यहाँ पर मेंशन किया है, इसी को संबोधन करने के लिए हमारे राज्य सरकार ने 2021 से वात्सल्य स्कीम करके शुरू किया है, जो IVF ट्रीटमेंट के लिए ₹3 लाख गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण अभी मोर देन 280 कपल ने इसका फ़ायदा उठाया है। और हम ये एक सिर्फ फर्टिलिटी रेट बढ़ाने के लिए नहीं है, ये एक माताओं को, माता होने का, मदर होने का ये जो प्राउड मोमेंट है, इसके लिए भी है। जिसका शादी के बाद भी जो कपल का बच्चा नहीं होता है, वो सबसे संसार में सबसे ज़्यादा दुखी होता है। लेकिन इस स्कीम के तहत हमारे सिक्किम के मुख्यमंत्री साहब ने जो
शादी करके जो मैरिड कपल का अपना चिल्ड्रंस नहीं होता है उसके लिए बहुत ही बढ़िया राहत दिया है। ये एक धार्मिक स्कीम भी हम बोल सकते हैं। इसी के साथ साथ में अभी जो हमारे वहाँ पर है आमा सशक्तिकरण योजना, इसमें सिक्किम सरकार ने जो बीपीएल फैमिली है उसके लिए हेल्थ, माताओं का हेल्थ कंसंट्रेट करके उसको मद्देनज़र में लेके अभी पर ईयर 4 गैस सिलेंडर खाना पकाने के लिए फ्री में सरकार अभी दे रहे हैं, पर ईयर 4 सिलेंडर्स। इसके साथ साथ में अभी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, पॉलिटिकल फील्ड में बोलना पड़ेगा, हमारे स्टेट में अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है इसमें 50% रिजर्वेशन, ह्यूमन रिजर्वेशन है, लेकिन 50% ह्यूमन रिजर्वेशन के साथ साथ अभी हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में मोर देन 50% ह्यूमन है। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम बोल सकते हैं, हमारे वहाँ पर 6 डिस्ट्रिक्ट है, 6 जिला है, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करके 12 नंबर्स होता है। उसमें देखने से 50% होने से तो 50-50 होना चाहिए था मेल और फीमेल, इसमें हमारा 60% है क्योंकि 7 वुमन है, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक पोस्ट में 7 नंबर्स फीमेल का है। तो इसमें हमारा जो ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिक्स से जो अपने गांव राज्य के लिए और राष्ट्र के लिए सुंदर और विकसित राज्य बनाते हैं उसमें अपना ये रोल निभा रहे हैं। इसके साथ साथ अभी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है जो पुलिस पर्सनल में रिक्रूटमेंट होता है इसमें वुमन को 50% रिजर्वेशन देने के लिए ऑलरेडी अनाउंस किया है। इसका पॉलिसी बना के गवर्नमेंट दे देंगे। इसमें ये करने से भी जो हमारे राज्य में वुमेन सेफ है, बेटी भी सेफ है, माँ भी सेफ है, बहन भी सेफ है, लेकिन फिर भी और स्ट्रांग दूसरों को भी सहयोग करने के लिए स्कीम बनाए है। मैंने यहाँ पर जो एंटरप्रेन्योर्स है हमारा वहाँ पर वुमन लीड स्टार्टअप में 75,000 से ज़्यादा हमारा बहन लोग इसमें इन्वॉल्व है। जैसे कि एसएसजी का जिक्र हुआ है पहले सेशन में, तो हमारे स्टेट में मोर देन 5600 एसएसजी से, जहाँ पर हमारे महिलाओं जो गांव-गांव में जो रहते हैं उनके लिए इस सेक्टर में आगे बढ़ाने के लिए हमारे महिलाओं को विभिन्न सरकार की तरफ से एसएसजी के माध्यम से भी आगे ले जाने के लिए विभिन्न फील्ड में लीडर बनाने के लिए आज सरकार बहुत ही काम कर रहे हैं। इसके साथ साथ में हमारा स्कीम, स्टेट का स्कीम सब बोलेंगे तो यहाँ पर टाइम नहीं है, अभी बाकी को भी समय देना है। मैं इतना ही बोलूँगी आज यहाँ पर जो ये मंच है, ये मंच भी सिक्किम के वुमन के लिए बहुत ही बढ़िया मंच है। और सिक्किम में हमारे सरकार चाहते हैं, मैं पहले फिर भी बोलना चाहती हूँ कि सिक्किम के बेटियां किसी राज्य से, किसी देश से, किसी अंतर्राष्ट्रीय से कम नहीं होना चाहिए। इसीलिए मनीता जैसे बेटियां दे दिया है और ये 2 एंटरप्रेन्योर से ऐसे कईयों बेटियों को आगे ले जाने के लिए, जन्म देने के लिए सरकार अभी हमारे साथ में। तो हमें लगता है, मुझे विश्वास है और हिस्ट्री हम हमारे देश में बनाएंगे। थैंक यू सो मच। Thank you. We heard a lot about the government schemes that are there in the state. But if we look at your success story, how much of it was due to your individual and family support, and how much of it would you attribute to the institutional support? If you could share, throw some light on it. My individual success story, yes. Family support is a major role. And I don't think in Sikkim there's such a problem as you're a girl, you stay back and you don't study and don't do this because you have to look after the kitchen and your family. No, they give us an equal opportunity. I think that's why there are so many of us over here today. And like I told you, the statistics also show that. So yeah, I was a mother when I sat for my exams, and I had just delivered my second child. So yeah, but my family was very supportive, and they still are, because we have to travel a lot in our field. We don't have any fixed timings, so my family is very supportive, and my children are there for me always. So that is also counts for a lot. And as for the institution, yes, since we are more women in the institution now, in the hierarchy now, I think we support each other, and the men are also very supportive of us.
So there are individual cases of harassment, and it's not that there are no cases. There are cases, there are police cases, but those are individual cases, and that is, I think, up to that individual. And society does not look at them, in a proper way. The society helps the weaker person who was oppressed. So that counts a lot. Great. Thank you, Annapurna ma'am. Rinzing, so I'm going to ask you two very short questions, and if we can just, because I know the time's up, we have not been able to finish two rounds. So yours was the first startup that actually got foreign direct investment to the state, right? We did. So, what does it take for a young startup as yours to be that first one to be able to attract? What did you do differently that others couldn't? And after that, also, I would like you to also add a bit about, because yours is also an impact led brand. And a lot of times, investors have a very clear eye on profits. But for an impact led brand, purpose is equally important, right? So, how do you balance purpose and profits, and especially when there are investors sitting on board? So, firstly, bringing FDI wasn't easy at all. We really slogged we've really worked hard to bring in the FDI. But what really set us apart was, probably our authenticity and the impact that we were trying to create. And at Agapi, we are constantly trying to redefine, who holds the power, who benefits from what we are doing, and the value which is created by centering the, knowledge, the traditional knowledge, trying to create that local ownership. And so all these factors, played a major role in bagging the FDI. And also, I think I can proudly announce today that we have just managed to close our second round of investment, and we have about 3 American institutions, investing in us. So, and coming to your next question, how do we balance profit and our mission? So, Agapi's mission is completely embedded in our, business model. It goes hand in hand. We cannot, coexist without the other. We coexist together. And talking about investors at Agapi, and as well as with the kind of investors that we have on board, we kind of measure our profit not only in terms of revenue that we generate, but the impact that we have on our society, the impact that we have on our community. And but at the same time, being mindful about the effect that our products leave on the environment. So I think, it just goes hand in hand, and we've been blessed with impact investors who not only look at the numbers. So yeah. So that's what responsible capitalism is, Exactly. isn't it? Um, Serna, I would like to now, ask you about, you're in a very traditional sector and you are trying to give a modern shift to it. Do you see among the youth, are they interested in the sector, or you see that there is a renewed focus in your own history and identity? A lot of it is which is related to your culture and craft and heritage. A lot of it is what you're trying to do. And also, do you think it has changed from sustenance based enterprises to more value driven businesses? So we can see a major shift in subsistence-based models, business models, to value-driven models. Especially the younger generation, the young people that I represent, we are more driven towards. Of course, profit is one of the major reason why we start a business. But apart from that, we are more driven towards bringing social impact and promoting our culture, our heritage, and giving it a global platform. So the younger generation is especially very taking a very active role in promoting, preserving our heritage and culture through various ways, not just in an entrepreneurial manner, but in a various ways they are trying to provide that platform towards the culture, the heritage as we speak. Thank you. Thanks, Palmo, for this. My last question. Manita, you have spoken about your journey, the support you got. Can you also give us a view on, how are you now working with a lot of young children, young adults in the state to encourage them to take up mountaineering, outdoor sports, adventure sports as a possible career choice?
थैंक यू। लॉन्ग टाइम बिफोर मैं एज ए इंस्ट्रक्टर काम करती थी, तब तो इनक्रेज करना वहीं पर हो जाता था। नाउ डेज आई गो टू स्कूल्स ना, तो मैं वहाँ जाके फर्स्ट ऑफ ऑल फिर जाके सिर्फ आपको बोलना नहीं होता है कि आप आओ और करो। इट्स लाइफ एंड डेथ गेम। तो आपको उसमें बहुत सा चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट यू ओन, आप आउटडोर स्पोर्ट्स कर रहे हो, माउंटेनियरिंग कर रहे हो, ट्रैकिंग जा रहे हो, हाइकिंग कर रहे हो, तो आपको क्या बेनिफिट्स होगा, आपको पहले ये बताना होता है। For example, now we have lots of people around, politicians, footballer, and public representatives. And so many people are here. So everyone have their own illness with their own, no, सबके पास होगा, बीमार तो रहेगा ही रहेगा। तो nowadays young youths are facing kind of depression and anxiety. So मैं ये वो वहाँ जाके ये बोलती हूँ कि आप लोग को सिर्फ ये एज अ ट्रैकिंग नहीं लेना है, आपको सीखना है। You connect with the nature. No, you're all the time with the phone. You're not able to think about anything, no? So come and join with us for the benefit of your no bright future. Of course, आप बाहर जाओगे तो you can learn. अभी आपको बाहर ऐसे नहीं जाना है, फिर you have to come with us to the mountain of to the jungle. You learn. आपको सीख, आप वहाँ पर सीखोगे टीम वर्क कैसे होता है। एज ए जनरल लाइफ में भी आपको बहुत सा काम टीम वर्क में करना पड़ता है। ऐसे करके मैं मोटिवेट करती हूँ स्कूल कॉलेजेस में जाके। And of course, I mean, a lot of these mountaineering teaches us about life skills, resilience, Yes, perseverance, जो और कोई I think नहीं सिखा सकता है. And yes, teamwork especially because mountains पे तो it's all about life and death. yes. So thanks a lot for these such thought-provoking insights. I mean, we all love this Thank discussion. you. May I now request Baichung Bhutia to please come on stage and present token of appreciation to our incredible women on stage.